Hello? Hello? Yes, sir. Assalamualaikum। कल के लेक्चर के बारे में आपको मतलब कोई क्वेश्चन है? कल हमने ये सेटल किया था, हमने ये देखा था कि ये जो काउंटेबल इंटरसेक्शन होता है ऑफ ओपन एंड डेंस सेट्स, इट्स डेंस ओनली इन बेयर स्पेसेस, राइट? हमने कल ये थ्योरम देखी थी। A metric space XD is a Baire space if and only if every countable intersection of open and dense sets in XD is dense in XD। ठीक है ना? Now using this theorem आज हम बेयर्स कैटेगरी थ्योरम को प्रूव करेंगे और हम ये थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जो हमने कल प्रूव करी थी। ठीक, और इसकी डायरेक्ट मतलब will now it will be there will basically will directly use this theorem। मतलब ये कोई इनडायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होगी, इट विल बी अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। हमने कल स्टेटमेंट भी देखा था बेयर्स कैटेगरी थ्योरम का। Bayes category theorem states that every complete space is a Baire space। ठीक, और Baire spaces हमें पता है कि are those spaces wherein countable intersection of open and dense sets is dense। ठीक, तो बेसिकली मैं आपको वही दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि in a complete space countable intersection of open and dense sets is dense। ठीक, so therefore a complete space must be a Baire space because countable intersection of open and dense sets is dense only in Baire spaces। In fact, it is if and only if। ठीक है ना? Let's come to the proof of this। Yes, category theorem। स्टेटमेंट ये है, every complete space is a Baire space। Proof। We start with a complete space। Let XD be a complete space। ठीक, या इसी के साथ लिखिए be a complete space and let an running from 1 to infinity be a sequence। Sequence means a countably infinite collection of open and dense sets in XD। So that means these ANs are open as well as dense। ठीक, full stop। इसके बाद let A be equal to the intersection of these ANs। ठीक, अब देखिए चूंकि this is an arbitrarily chosen countably infinite collection of open and dense sets, now if I show that this intersection A is dense, it would mean that every countably infinite intersection of open and dense sets is dense। So therefore you must be in a Baire space because ये खाली Baire spaces में होता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ वही होगी, मैं आपको दिखाऊंगा this A is dense फर्स्ट स्टेप। और ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वो डेंसनेस का जो हमारे पास एक
एक ना एक इक्विवेलेंट क्राइटेरिया जो है हमारे पास डेंसनेस का वो हम इस्तेमाल करेंगे. मतलब वी नो दैट अ सेट E in a metric space is dense if and only if it intersects every non-empty open set. ये हमने ऑलरेडी obtain किया है रिजल्ट. If XD is a metric space and E is a subset of X, then E is dense in XD if and only if and only if E has a non-empty intersection with every non-empty open set in XD. ठीक है ना. हम इसकी मदद से दिखाएंगे कि A is dense. क्या करिए, let A be equal to this and capital O be a non-empty open set in XD. Be a means it's arbitrarily chosen. ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट हो सकता है ये फुल स्टॉप. नाउ सिंस यहाँ मैं आपसे रीजन पूछूंगा ऐसा क्यों है. नाउ सिंस O intersected with A1, ये जो है is नॉन एम्प्टी. बताइए क्यों है ये नॉन एम्प्टी. A1 is dense. हाँ, A1 is dense, so it must intersect O because O is non-empty open. ठीक, it's non-empty and open. Open because A1 as well as O, they are both open. है ना. These ANs are not just dense, they are also open. ठीक, so this is non-empty and open. If that be the case, now we can find. अगर ये non-empty है तो इसके अंदर आप एक एलिमेंट पिक कर सकते हैं और वो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा. क्यों? बिकॉज ये ओपन है. सो वी कैन फाइंड a point say x1 in X and चूंकि इसका इंटीरियर पॉइंट भी होगा तो there will be an open sphere also, so that means there will be a radius. Let's suppose the radius is sigma 1. such that ये होगा x1, it will be in the open sphere centered at x1 and radius sigma 1, and this open sphere will be contained in the intersection O intersected with A1. ठीक है ना. लेट्स कॉल इट, इसे आप लेबल करिए स्टार. अब आप वो रोमन नंबरिंग का इस्तेमाल करिए, नॉट स्टार. ना क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेबलिंग हमें शायद करनी पड़े, तो बेहतर है आप रोमन नंबरिंग का इस्तेमाल करिए. लेट्स कॉल इट फर्स्ट. इसके बाद लेट R1 be equal to the minimum of 1 comma sigma 1 by 2. ठीक, चूंकि sigma 1 is positive, so sigma 1 by 2 is positive, so therefore this minimum will be positive because ये minimum इन्हीं में से एक होगा.
मिनिमम ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ मेंबर ऑफ द सेट, तो ये R1 इन्हीं में से एक होगा, और दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, सो R1 इज पॉजिटिव. Then R1 is positive and X1 belongs to S X1 R1, है ना, because open sphere contains its center. X1 is the center of this open sphere, so X1 belongs to this. और ये जो है मैं आपसे कह रहा हूँ, this will be contained in S, oh sorry, X1 R1. What is this? ये क्या है, मुझे बताइए. आप स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, so what is this? बताइए क्या है ये. आप अपनी नोटबुक्स देखिए और मुझे बताइए व्हाट्स अ क्लोज्ड स्फीयर. If XD is a metric space, little x be a point at capital X and R be greater or equal to 0, then the set this S X R, which is defined by this, it's equal to all those elements in X whose distance from X is less than or equal to R. अगर आपसे कंपेयर करेंगे ना विद द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर, आपको दो डिफरेंसेस मिलेंगी. ओपन स्फीयर की डेफिनेशन में यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, और दूसरी चीज ओपन स्फीयर में जो रेडियस है इट्स पॉजिटिव, वेयर एज इन केस ऑफ क्लोज्ड स्फीयर्स रेडियस कैन बी जीरो एज वेल. ठीक, दिस सेट इज कॉल्ड द क्लोज्ड स्फीयर centered at X with radius R. अब इसमें कुछ एविडेंट, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस इसमें ना एविडेंट है. पहली ऑब्जर्वेशन ये है, X belongs to S X R. Closed sphere always contains its center because X fulfills this qualifier. ठीक है ना, it satisfies this requirement. अगर आप d of x comma x देखेंगे, it will be 0 and 0 is less than or equal to R. So X fulfills this, so X belongs to this. The second thing is this. If R is positive, अगर R positive है, then the open sphere with center x radius R, this is contained in the closed sphere with center x radius R. ये भी आप easily देख सकते हैं, because if you take y in this, then अगर आप ऐसा करते हैं, if you take y in this, then d of x comma y, it will be strictly less than R. Strictly less than R means ये चीज फुलफिल हो रही है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए या तो स्ट्रिक या इक्वालिटी. स्ट्रिक आ रहा है तो मीन्स y belongs to. ठीक. So every point in the open sphere with center x radius R is contained in the closed sphere
with center x radius r, so that means open sphere is subset of a closed sphere. तो तीसरी चीज जो यहाँ है वो ये है, देखिए ओपन स्फीयर्स आर ओपन, whereas closed spheres जो है they are closed sets. हम ऐसे लिखेंगे एस एक्स आर, ये जो है दिस इज क्लोज्ड इन एक्स डी, ये आप इजीली देख सकते हैं इफ यू टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. और जो एक और चीज यहाँ है इन रिगार्डिंग दीज क्लोज्ड स्फीयर्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें वो पॉइंट्स है जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम x is what, less than or equal to r. Now if you pick 2 points in this, suppose u comma v are 2 points in s x r, then distance between u and v जो है, या इसको आप एस्टिमेट ना, इसका एस्टिमेट आप लगा सकते हैं. कैसे? आप पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस्तेमाल करिए. दिस इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ u comma x प्लस डी ऑफ x comma v. अब डी ऑफ u comma x, चूंकि u यहाँ से आ रहा है, so it is less than or equal to r. Same is the case with this, so this is less than or equal to r plus r, which is twice r. So that means every distance in sxr is less than or equal to twice r. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा the diameter of sxr क्या होगा? ये diameter is the supremum of all the distances which you can compute in the set. यहाँ जो डिस्टेंसेस आ रही है आप देख रहे हैं कि दैट एवरी डिस्टेंस, क्योंकि u और v ऐसे ही आर्बिट्रेरली हमने सिलेक्ट किए थे, so that means every distance in sxr is less than or equal to 2r. So that means 2r becomes an upper bound for the distances in sxr. So it must be greater or equal to the least upper bound. So diameter is less than or equal to twice r. याद रखिएगा, diameter of a closed sphere is less than or equal to twice r. मतलब it cannot exceed 2 times its radius. ठीक. और एक और चीज मेरे ख्याल से ये भी आप नोट करके रखिए. पहले मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. द डायमीटर ऑफ एस एक्स आर दिस इज लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस आर. और एक और चीज जो आप नोट करिए करके रखिए वो ये है, इफ zero is less than or equal to r and r is strictly less than say rho या sigma लीजिए, less than or equal to sigma, then the closed sphere SXR, this will be contained in the open sphere SX sigma. अगर ऐसा है, if R is strictly less than sigma, क्या आप इसे देख सकते हैं? ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है. आप क्या करिए, आप यहाँ से y लीजिए. That would mean distance between x and y must be less than or equal to r. Now r is strictly less than sigma, so strictly less than sigma. So that would mean this distance is strictly less than sigma. Strictly less than sigma means y belongs to S x sigma open sphere. Y was chosen arbitrarily from this, so that means every point in this is contained in this, so that means it's a subset. तो मैं यहाँ कह रहा हूँ. ठीक है, अब वापस अब यहाँ आइए. तो आप देखिए है ना ये इसके अंदर, this is open sphere, this is closed sphere with the same center, same radius. तो open must be contained and closed. ठीक. And this is contained in, ये मैं आपसे पूछूंगा कि this is contained in S x1 sigma 1 open sphere. कैसे? Because इसका रीजन ये है, One is greater than minimum. R is R1 rather, it is less.
less than or equal, less than. sigma 1 by 2, and sigma 1 by 2 is strictly less than sigma 1. So this closure sphere will be contained in the open sphere. ठीक है, एंड ये हमें ऑलरेडी पता है बाय जिसको हमने ऊपर फर्स्ट रखा है. दिस इज कंटेनड वेयर, दिस इज कंटेनड इन O intersected with A1. ठीक, स्टॉप. आप चाहिए आप इस क्या करिए, आप इसे सेकंड रखिए, ये भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब इसके बाद अगेन since S x1 R1 intersected with A2 is non-empty and open. क्यों है non-empty and open? Reason is this, because this is dense, this is non-empty and open, so therefore the intersection must be non-empty. और चूंकि ये दोनों open है तो intersection must be open also. So this is non-empty and open. अब अगर ये non-empty and open है तो फिर से आप वही कर सकते. You can find a point x2 in the intersection, और चूंकि intersection open भी है तो that means that point will be an interior point of this intersection, so that means there must be a radius also. ठीक, we can, मैं वही लिखने जा रहा हूँ, we can find x2 in x and sigma 2 positive such that x2 it will be in open sphere S x2 sigma 2, and the open sphere S x2 sigma 2 will be contained in S x1 R1 intersected with A2, right? Full stop. Let's call it 3. इसके बाद let, जैसे आपने ऊपर R सिग्मा 2 से सिग्मा 1 से R1 क्रिएट किया था, यहाँ हम सिग्मा 2 से R2 क्रिएट करेंगे. समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे ऊपर हमने सिग्मा 1 की मदद से R1 क्रिएट किया था, नीचे हम सिग्मा 2 की मदद से अब R2 क्रिएट करेंगे. और ये क्या होगा? Let R2 be equal to the minimum of 1 by 2 and sigma 2 divided by 2. Then चूंकि sigma 2 is positive, so R2 must be positive. चूंकि 1 by 2 is already positive. Then R2 is positive. ठीक? And the point x2, it must be in the open sphere with center x2, radius R2. And the open sphere must be contained in the closed sphere S x2 R2. और ये closed sphere जो है, this must be contained in the open sphere S x2 sigma 2, because R2 is strictly less than sigma 2. ठीक, और जो open sphere है ये कहाँ पर है खुद? मैं ये जो है ना, ये जो मैंने आपके लिए यहाँ लिखा था, ये मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. लेट्स गेट रिड ऑफ दीस थिंग्स. आपने वैसे भी नोट किया होगा अपनी नोटबुक्स में, तो ये जो है by 3 this is contained in this, right? This is contained in S x1
R1 intersected with A2. ठीक है ना? तो अब यहाँ आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? लेट्स कॉल इट 4 इन द पहले आप इसे ना लेट्स कॉल इट 4. अब कोई पैटर्न आप बनता दिख रहा है यहाँ पर? At the first stage हमारे पास rather at the end of the first stage we had what? We had x1 r1 and at the end of the second stage अब हमारे पास क्या है? We have pair x2 r2. Now if you continue in this way तो हमें क्या मिलेगा? मैं वही लिखने अब चाह रहा हूँ. ठीक है? Continuing in this way we get what? बताइए. We get हमें पहले x1 मिला फिर x2. अगर आप तीसरी स्टेज में जाएंगे वहां आपको x3 मिलेगा and so on. So you get a sequence. We get a sequence xn running from 1 to infinity. कहाँ पर? In they are all points of x, so it's a sequence in x and a sequence rn. क्योंकि हमें rn से मिल रहा है ना, पहले हमें r1 मिला जिसके बारे में हमें पता है कि that it is less than or equal to 1. Then at the second stage we got r2 और r2 के बारे में आपको पता है it is less than or equal to 1 by 2. तो अब यहाँ क्या मिल रहा है आपको? We get a sequence rn. कहाँ पर? In r, the set of real numbers with 0 less than, क्योंकि rn पॉजिटिव भी थे, rn less than or equal 1 by n. ठीक, because it's minimum of. In general अगर आप पैटर्न यहाँ देख रहे हैं ना क्या हो रहा है? r2 is minimum of 1 by 2 sigma 2 by 2. r1 is minimum of 1 sigma 1 by 2. By the way 1 को ऐसे लिखा जा सकता है 1 by 1. So r3 will be minimum of 1 by 3 and sigma 3 by 2 and so on. r4 होगा by the way क्या? Minimum of 1 by 4 and sigma 4 by 2. और भी कुछ चीजें यहाँ हमें मिल रही है अगर आप ये पैटर्न को एड्रेस करेंगे, अगर आप इसे देखेंगे. Satisfying the following properties. As satisfying the following. बस. Satisfying की जगह आप लिखिए having the following. Having the following properties. पहली प्रॉपर्टी
मैं 1/1 ये ना प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी आप इसे देखिए। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एस एक्स टू आर टू it's contained in this. इन जनरल इसका क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होगा अगर आपने थर्ड स्टेज पर इसको लिया होता तो वहां क्या होता। हेलो, आप सबसे पहले फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट में आप कह रहे हैं कि दैट दिस इज कंटेन्ड इन ओ इंटरसेक्टेड विद A1, और फिर नीचे इनफैक्ट वो मैंने सेकंड में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करके रखी है, तो आप डायरेक्टली ये सेकंड से भी देख सकते हैं। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है, दिस is contained in O intersected with A1. Sx1R1 is contained in O intersected with A1। ठीक है ना। अब नीचे आप देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दैट इनफैक्ट मेरे ख्याल से हम खाली ना ये क्लोजर स्फीयर्स को कंसिडर करेंगे, हमारे लिए ओपन स्फीयर्स एज सच। हाँ, अब क्लोजर स्फीयर्स को ही देखिए, वही बेटर होगा हमारे लिए। पहली चीज जो आप यहाँ से देख रहे हैं, देखिए मैं बताऊंगा क्या करें आप। अब पहले ये देखिए, यही से फिर आपको ना ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। आप यहाँ देख रहे हैं दिस क्लोजर स्फीयर एस x1R1 इज कंटेन्ड इन O इंटरसेक्टेड विद A1। चलिए इसको लिखते हैं किसी जगह। हम पहले देख रहे हैं क्लोजर स्फीयर एस x1R1 इज कंटेन्ड इन O इंटरसेक्टेड विद A1। ठीक है ना। अब नीचे जाइए आप, यहाँ पर ये जो जिसको हमने 4 से लेबल किया, 4 में आप देखिए the closed sphere Sx2R2 is contained where is contained in this intersected with A2। चलिए पहले इसी को लिखते हैं। आप देख रहे हैं, ये याद रखेंगे आप, closed sphere is contained in this Sx2R2 is contained in Sx1R1, ठीक, intersected with A2। ये है ना। एक दफा फिर से आपको दिखा रहा हूँ। Closure sphere X2R2 is contained in X1R1 open sphere intersected with A2। यही मैंने यहाँ लिखा। ठीक, अब ये जो है since this is open sphere मतलब without boundary, so it must be contained in Sx1R1 closure sphere।
intersected with A2. ठीक है ना? और ये जो है Sx1R1 closer sphere, we know that it's contained in O intersected with A1. So that means it's a part of O as well. तो आप कह सकते हैं कि this is contained in O intersected with A2, because this, from this you can easily see that it's a part of O. So it is contained. क्या pattern अब देख रहे हैं आप? लेट्स, ये जो बाकी सारी चीजें, लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल दोस थिंग्स, हम बाकी खाली वो रिटेन करेंगे जहां से हम ना फिर ये पैटर्न देख सकते हैं. तो हमें मिला है कि दिस इज कंटेनड इन दिस, दैट मींस दिस इज कंटेनड इन ओ इंटरसेक्टेड विद ए2. यहाँ से आप ना पैटर्न को आइडेंटिफाई करनी चाहिए. इन जनरल क्या होगा? एस एक्स एन आर एन, ये कहाँ होगा बताइए? O intersection AN. इस मस्ट बी कंटेनड इन ओ इंटरसेक्टेड विद ए. ठीक है, ये यही मैं लिख रहा हूँ. पहली चीज जो हम पैटर्न को जब आप देखेंगे तो वहां से ये मिल रहा है एस एक्स एन आर एन, दिस इज contained in O intersected with AN. ठीक, तो ये तो गई एक चीज. इसमें कुछ और भी है. देखिए क्या, वो आपको ये 4 को देखिए आप, 4 में आप कह रहे हैं, 4 को फिर से आप देखिए, 4 में आप कह रहे हैं कि दिस इज कंटेनड इन दिस. चलिए फिर से इसको लिख लेते हैं. क्लोजर स्फीयर x2r2 is contained in this open sphere x1r1 intersected with a2. लिखिए इसको, क्लोजर स्फीयर x2r2 is contained in open sphere sx1r1 intersected with a2. Right? Now this is contained in the intersection means it will be part of each set appearing in the intersection. So in particular it must be contained in sx1r1. है या नहीं? Because sx1r1 appears in the intersection, so it's part of sx1r1 open sphere. ठीक है ना? And open sphere with center x1 radius r1 is contained in closure sphere with center x1 radius r1. ठीक, तो कहने का मतलब ये है, the closure sphere sx2r2, this will be contained in the closure sphere sx1r1. ठीक है, तो क्या पैटर्न आपको अब देखने को मिल रहा है यहाँ से? इन जनरल आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एस एक्स एन प्लस वन आर एन प्लस वन will be contained in where? S x n r n. So that means these closed spheres, they form a decreasing sequence. और चूंकि closed spheres है, so therefore they are closed sets, so they form a decreasing sequence of closed sets. मैं ये भी लिखने जा रहा हूँ. S x, this will be true for every n in the set of natural numbers. और ये S x n plus 1 r sub n plus 1 closure sphere, this will be contained in the closure sphere S x n r n. Again this will be true for all n's in the set of natural numbers. Since
S X N R N, n running from 1 to infinity. ये सिंस नहीं आप लिखिएगा therefore, इसका ना ऊपर ही एविडेंस है हमारे पास. therefore this is by this B, this is a decreasing sequence of what? Decreasing sequence of non-empty, क्योंकि closure spheres are non-empty. They are closed also, closed sets with, what about the diameters? अगर आप इसका diameter लेते हैं S X N R N, we know that it cannot exceed 2 times the radius, therefore it is less than or equal to 2 times R N, R sub n. और R sub n के बारे में क्या जानते हैं? अब आप जानते हैं कि that it is less than or equal 1 by n. So therefore this is what? This is less than or equal to 2 by n, and 2 by n it goes to 0 as n goes to infinity. और चूंकि आप already एक complete space में है, so that means all the requirements of what? कौन सी theorem यहाँ हम कौन सी theorem की तरफ हम जा रहे हैं? You are in a complete space. अब नीचे you are possessing what? A decreasing sequence of non-empty closed sets with diameters going to 0. तो क्या यहाँ अप्लाई होगा? कोई है जो मुझे बता सकता है? 10 Cauchy. नहीं, कौशी नहीं. 10 बाय कोई और ट्राई करना चाहेगा? कंप्लीट होगा ये x कंप्लीट. कंप्लीटनेस तो ऑलरेडी हमने अस्यूम किया. इसका मतलब है हमने पीछे कुछ देखा ही नहीं है. फिर आप ये जरूरी होता है मैथमेटिक्स में, आपने जो आप चीजें पढ़ते हैं ना, फिर उनको वापस आपको देखना होता है और याद रखने की कोशिश करनी होती है. और ये एक वेल नोन रिजल्ट है, इसका आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी यूज किया होगा. जब आपने कॉची-गुरसाट थ्योरम प्रूव करी होगी फॉर ट्रायंगुलर कंटूर्स, वहां भी इसका इस्तेमाल होता है. इट्स द कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम. अब देखिएगा, ये स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ी थी. 10 बाय थी कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम. क्या होगा? द इंटरसेक्शन ऑफ these ऐसे लिखूंगा मैं इसको, आप पहले वेट करिए फिर आप कॉपी करिएगा. हमें ये मिलेगा इंटरसेक्शन n runs from 1 to infinity s x n r n. This is non-empty because they are decreasing, they are closed sets, they are non-empty, and they have diameters going to 0, so their intersection has to be non-empty because you are in a complete space. Complete spaces में इस तरह का intersection हमेशा non-empty होगा. This is Cantor's intersection theorem. अब ये कहाँ पर है? ये S X and R N. S X and R N जो है, this is contained in O intersected with A N, right? It's contained. It's मतलब this is a bigger set. हम नीचे ये इस्तेमाल करेंगे, हम A को नीचे इस्तेमाल करने जा रहे हैं. So this will be contained in किसमें? Intersection n runs from 1 to infinity O intersected with an. ठीक है ना? Because this
contains this. ठीक, अब यहाँ देखिए आप इंटरसेक्शन में ओ हर एक टर्म या रादर हर एक सेट में आ रहा है इंटरसेक्शन विद ओ, तो आप इसे ना भी कॉमन ले सकते हैं. ठीक, so this is equal O intersected with intersection n runs from 1 to infinity a n. ठीक है ना, तो क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं O intersected with this intersection is non-empty. By the way, intersection को आपने क्या नाम दिया था, आपने इसको A कहा था. So this is O intersected with A. और आप देख रहे हैं कि it's non-empty. Hence A must be dense. Why? Because it intersects O, and O is an arbitrarily chosen non-empty open set. So that means A intersects every non-empty open set. So A must be dense in XD, and thus XD is a Baire space. So every complete space is a Baire space. ठीक, अब हम A होगी, theorem तो हो गया. अब हम इसका मतलब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे. आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे हो रही है? उन्होंने लिंक भेजी आपको या नहीं? सच कहिएगा. नो सर. चलिए ठीक है, फिर हम पहले इसकी अब एप्लीकेशंस देखेंगे. बिफोर गोइंग टू एप्लीकेशंस आप कुछ डेफिनेशंस नोट करिए. पहली डेफिनेशन, एफ सिग्मा सेट्स. मैं आपको यहाँ बताऊंगा व्हाट आर एफ सिग्मा सेट्स या एफ सिग्मा सेट. लेट XT be a metric space and A be a subset of X. Then this A is said to be an F sigma set if and only if this A can be written as a countable union of closure sets in XT. जिस किसी भी सेट को आप लिख सकते हैं as a countable union of closure sets, that set becomes a rather an F sigma set. ठीक है, these are F sigma sets. इसी तरह से एक और डेफिनेशन आप नोट करिए, G delta set. Let XT be a metric space and A be a subset of X. Then this A is said to be a G delta set if and only if this A can be written as a countable intersection बेसिकली जी डेल्टा जो है ना, इट कम्स फ्रॉम गबीत दर्शनित. ये जर्मन है फॉर काउंटेबल इंटरसेक्शन.
set is said to be a G delta set if and only if it can be written as a countable intersection of open sets. ठीक है, this is definition of a G delta set. It's called a set is called a G delta set if we can write that as a countable intersection of open sets. अब compare करिए इसको with definition of F sigma set. F sigma set में है countable union, whereas यहाँ countable G delta में आता है countable intersection. F sigma में होता है closed sets, G delta में होता है open sets. Countable intersection of open sets means G delta. Countable union of closed sets means F sigma. ठीक, अब एक रिमार्क आप इसके नीचे लिखिए. Let xt be a metric space and A container in X be an F sigma set. अगर ये F sigma set है, then you must be able to write A as countable union. Where these ANs would be what? They'll be closed in XT. Therefore, अब अगर आप इसकी complement को देखेंगे, what will be the complement? By De Morgan's law, it will be intersection n runs from 1 to infinity, an complement. An's are closed, so an complements must be open. So therefore, this becomes countable intersection of open sets. ठीक है ना? So therefore, it must be a G delta set. तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ से? Complement of A. What's A? A is an F sigma set. और आप देख रहे हैं इसका जो complement है, it's a G delta set. Complement of an F sigma set is a G delta set. G delta. हाँ, सर हमें दूसरी क्लास है. चलिए ठीक है. मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो आप फॉर सेंड करूंगा, वो देख लीजिएगा, जिसमें हम ना ये एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे. चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं. इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज के लेक्चर के रिलेटेड? इसको देख लीजिएगा. ये थ्योरम हमने प्रूव कैसे करी. इसको यहाँ ना लिखने का एक और ना इससे भी ज्यादा एक एलिगेंट तरीका है, जिसमें हम बेसिकली वी सिलेक्ट दीज एक्स एंड्स एंड आर एंड्स इंडक्टिवली, बट वो थोड़ा सा ना कम्पैक्ट है, उसमें इतनी डिटेल्स नहीं है, और फर्स्ट रीडिंग के लिए मेरे ख्याल से वो सही नहीं है. आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आपको मतलब इससे भी ना बेसिकली मैंने पता नहीं क्या कहा आपसे, इससे भी ज्यादा एलिगेंट तरीका है इस चीज इन चीजों को ना ऐसे यही चीज है, आइडिया यही है, बट इसको आप इससे भी ज्यादा अच्छे एलिगेंट तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं. वेयर वी एक्चुअली सिलेक्ट दीज एक्स एंड आर एंड्स यूजिंग इंडक्शन. ठीक, यहाँ भी वही हो रहा है, बट दिस इज लेस एलिगेंट. ठीक है ना? बट इसमें यह है कि वो जो एलिगेंस है, इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ डिटेल्स. वो एलिगेंट है, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा इलेबोरेशन, वो मतलब क्लैरिटी जो है ना, या मुझे कहना चाहिए रेडीमेड क्लैरिटी, वहाँ भी क्लैरिटी मिल है, बट
आपको उसके लिए कुछ थोड़ा सा काम करना होगा। यहाँ तो कंपैरेटिवली यू हैव रेडीमेड क्लैरिटी, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस देखते ही समझ आ रहा है कि दिस इज द पैटर्न ए एंड बी। वेयरएज वहां थोड़ा सा आपको, बट दैट शॉर्टन्स द प्रूफ। अगर सपोज इसमें 40 या 50 लाइन्स है, वो वहां आपको खाली 25 लाइन्स में ही काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं, आप अच्छा लगा कर लें। और हाँ, अभी आप सारे यहाँ यही है, तो कल जो हमारी क्लास है ना वो थोड़ा सवेरे होगी। हम कल अब 9 नहीं, लेकिन हम 9:30 स्टार्ट कर रहे हैं कल, खाली कल के लिए बस। आप जा सकते हैं।